Okay, we had stopped let's have a quick recap of what we did last time. It was like parts of female reproductive system and male reproductive system. Why some recording? So let's recall the male reproductive system and female reproductive system parts. I'm sure you people can help me name the things. For example, this is obviously, what am I drawing? This one on the top, kidney, then this one, ureter, then what's this? Urethra, and then we have got this testes where scrotum, and this tube is called sperm duct, which connects to urethra, and here is a prostate gland. And then we had discussed that some part of urethra anyways is outside the skin. So, okay, function of testes, Mr. Kamil. Testes produce, beta, they produce sperms and also the hormone testosterone. And you know, function of Assalamu alaikum, sir. Warisam. Scrotum's function is to hold the testes. But we are doing male, it's a recap. So this is ureter. This one is sperm duct. Testes. Scrotum. The sac that holds the testes. And this one is what? Prostate gland. And this tube is urethra. The outer portion of which is called penis. ये समझ लें, याद खुद ही जाएंगे. So beta, what are the functions of ureter? क्या beta? Brings urine from kidney to bladder. कामिल भाई आज क्यों खामोशी है? Then sperm duct carries sperms from testes to urethra, sorry. And then prostate gland adds fluid to the sperms that makes semen. Urethra carries urine and semen out of the body. And testes produce sperms and testosterone. Worrisome. Scrotum holds the testes. And penis is the male reproductive organ. So we are on recap, and let's now have female reproductive system parts. I see from online friends to help me label. If I make this as, you know. Ovary? Yes. Very good, Drushavar. So this one is ovary. Kamil beta, what is it? This one. Uterus? No, oviduct. And this one is uterus. And this is cervix. And can anybody name this tube? Vagina? Vagina, yeah. And how to say the functions? Yes, ovary produces? Ovules? Yeah, but in animals it's eggs. Eggs and also the hormone estrogen. And then oviduct is where fertilization occurs. It is where
Fertilization is when sperms go up towards this place and eggs are released from ovary, so they mix here. And uterus is where implantation occurs. Implantation means when sperms and egg combine, they make zygote. Zygote divides by dash to make a ball of cell. Zygote divides. Meiosis? No, mitosis, because chromosome. Look, meiosis is needed to make gametes. But now we are not making it. Means when sperms and egg combine, zygote is made. Zygote then divides by mitosis. You understand it, no? Mitosis is where chromosome number is kept same, yeah, is halved. Same. Same, stays same. So mitosis increases the number of cells in the zygote. फिर हम ये बन जाते हैं, पूरा इंसान बन जाता है. So then with that embryo, zygote, I repeat, imagine egg has come out that combines with sperm coming from here. So बच्चों, sperm nucleus combines with egg nucleus. याद है आपको? And the new thing is made, which we say zygote. Zygote then divides by mitosis and makes a ball of cells. And that ball of cells gets implanted here. This is called embryo. This ball of cell. और यही आगे जाके baby बनता है, ठीक है? This is embryo. A ball of cells made by mitosis. It gets implanted, fitted, right? And then cervix widens and birth is made possible, right? And vagina is where intercourse, you can say it's a birth canal. When a vagina is through birth occurs, yeah, it's also called place for sexual intercourse. This is all about the recap so far. So dear friends, the new thing in our discussion is fertilization. Over to Mr. Kamil. Fertilization in human, what is that? Fertilization is fusion of Sperm and egg nucleus? sperm, very good. Sperm nucleus with egg nucleus. Yeah. Sorry, beta. Which fluid? I could not hear you. Diploid and haploid, yes. Diploid is which has two sets of chromosomes. Like each of our body cell is diploid, but gametes are haploid with one set. Look, sperms have 23 chromosomes, eggs have 23. When they combine, zygote is made, which has 46. So two sets. Yeah, उस process को जिसमें zygote बनता है. So what is fusion of sperm nucleus with egg nucleus? This is called fertilization. Done? Done. So, you know, a teacher had made a wonderful mnemonic, and that is in the questions as well, about sperms and egg. शायद आपसे पहले ही बात हुई थी. Many, minute, motile. You know, motile means movable. And few, fat, and fixed. So can you guess what is what? Many. First one is the first one and second one is egg. Very good. Because eggs don't move, eggs stay there, sperm goes and fertilizes them. So बच्चों अब हम करेंगे adaptive features. ये तो वैसे एक fun है. So adaptive features of sperms and egg. You know what is meant by adaptive features? I mean the features which help them perform their duty. Well, yeah, what are the adaptations? So number one about sperm is that it has flagella. So will anybody tell me that flagella of sperm, how does it help sperm? Yes, please. It helps sperm travel all the way. What is flagella? Flagella is the tail-like structure
Sperms are thrown here at cervix. Cervix का job क्या है? Ejaculation. It is where ejaculation occurs. Ejaculation means semen is thrown here. Right? Yes, sir. In our Islamic tradition, sexual intercourse is only legal when two people are married. Otherwise, it's called fornication, adultery. The thing is, we are back. So, dear students, mitochondria and the third adaptation for this is enzymes. It has some enzymes. So, look, sperm has flagella. Let me label flagella. Singular is flagellum. So, beta इसका purpose क्या होगा? Helps move through dash till dash. Very good. Through dash till dash. Through. Through uterus till Egg. oviduct. Very good. Till egg. और mitochondria क्या करेगा? It will provide energy for this movement. ठीक है? Mitochondria will provide energy. यहाँ पे होता है mitochondria इस जगह पे. इस जगह पे ना उसको कहते हैं middle piece. जहाँ बहुत सारे mitochondria होते हैं. So mitochondria क्या करता है? Ramin provides energy for what? For movement. यार sperm travel करता है ना. और enzymes कहाँ होते हैं? आसान बेटा. Enzyme इधर होते हैं यहाँ पे. इधर होते हैं आगे. Acrosome. It's called acrosome. Top. So acrosome contains enzymes, and they are used to cut the egg cover. What do enzymes do? They cut the egg cover. Kamil bhai, they cut the egg cover. It is also called jelly coat. Jelly coat. Done? Any questions so far? Now about जो egg है ना, egg also has some adaptive features. तो egg की शक्ल इस तरह से है. तो बच्चों देखो, एक तो इसका जेली कोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बाहर वाला जेली कोट. लोग इसका फायदा क्या है कि इसके अलावा ये कौन बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ. अमीर है, थैंक यू. So jelly coat allows entry of dash. Sperm? Yeah, entry of one sperm, but stops others. समझ दो ना. एग में ह्यूमन एग में 23 क्रोमोसोम. कितने बेटा? 23. और अगर एक स्पर्म आएगा तो 23 कितने हो जाएंगे? 46. And if one more comes, मुझे पता था लेट हो रही है, ये रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा. One more comes, that is 46. कितना बच्चों? 46 हो जाएंगे. तो गलत, उससे एक स्पर्म एक्स्ट्रा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए बेटा. how many sperms should enter the egg nucleus? Only one है ना? One. So that 41 sperm, so that 46 is achieved. अगर एक और आ जाएगा तो 69 हो जाएंगे. Yes, no? एक और आ जाएगा तो 92 हो जाएंगे. So jelly coat allows the entry of one but stops the entry of more. Done? Others. दूसरा एक बहुत मजे की बात मैं आपको बताता हूँ. देखो ये प्लीज आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, जैसे कामिल ने कहा हाफ क्रोमोसोम्स 23, और इसमें भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस है. हैव यू नोटिस्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि स्पर्म का जो न्यूक्लियस है दैट गोज टू एग न्यूक्लियस. अगर एग का न्यूक्लियस निकाल के स्पर्म में डाल दें तो इंसान नहीं बन सकता. इसका मतलब है कि साइटोप्लाज्म ऑफ एग इज वेरी स्पेशल. यस और नो? I hope you understand what I wanted to say.
that if we take the sperm nucleus out, fertilization में ये होता है ना, इसका sperm nucleus combines with egg nucleus. So if we take the sperm nucleus out and put this in egg, zygote is made and the life starts. But if we take the egg nucleus and put this in sperm, 2N, diploid nucleus is made, but life doesn't start up. It means sperm cytoplasm is not capable. You understand my point? So egg का cytoplasm is बहुत important होता है. Why? Because it has energy reserve. So the second adaptation is what? Energy, reserve of cytoplasm. सर साइटोप्लाज्म क्या करता है? Cytoplasm has energy reserve, energy stores. I mean, glycogen, protein, things. So look, growth में energy चाहिए ना, that energy, अगर egg के nucleus को sperm में डाल देते हैं तो sperm के cytoplasm में वो energy नहीं है, वो resource, वहाँ पे glycogen ही नहीं है, वहाँ energy stored, protein, fats नहीं है. So egg का cytoplasm क्या होता है? It is energy reserve of cytoplasm, sponsors helps growth. ठीक है बच्चों? Hello. So then, where are we? Miss Khadija, you just came up. I'll put your question. There's a syllabus that tells us compare. Are you with me, beta? Compare male and female gametes in terms of size, structure, motility, and number. Mr. Kamil, can you compare male and female? That's a beautiful mnemonic. The way to make it. Number. Numbers that are more spelling एक हमने बताया many, minute. ये बहुत मजे का था. Many, minute and Amir Adar Fahad Rahim. Many, minute and motile है ना? That is what. Yeah. जी. Few fat fix. एक मिनट. Many, minute and motile is sperm. Few fat and fixed are the eggs. So the question is. Sorry बेटा. ये मैं आपको भेजूँ. Few fat and fixed. So dear friends, अब आप मुझे बताइए, Kamil, can you compare male and female gametes in terms of size? Which is bigger? Yes. Egg is much bigger than sperms. Egg, by the way, एक महीने में एक egg बनता है. Very rarely both ovaries make egg. Otherwise, एक ही बनता है 1 month. But sperms, a single ejaculate may have millions of sperms. तो आप अंदाजा लगाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 2 कॉन्ट्रैक्टर हैं और एक बनाते हैं एक महीने में एक घर और एक बनाते हैं एक महीने में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हाउसेस. तो ऑब्वियसली वो जो पूरी एनर्जी एक घर पे लगा रहा है, तो दैट विल बी मोर एनर्जेटिक, मोर पोटेंशियल, मोर बेटर डेवलपमेंट. वैसे एक अजीब सी एनालॉजी है, बट द थिंग इज बिग साइज. क्विक प्लीज. एग. फ्यू इन नंबर. एग. एम मोटाइल, मतलब एम मूवेबल. Egg. Yes. So this is all about comparing the gametes. इतना ही हमें इसमें enough चाहिए. Well, zygote is the first dash cell. Diploid. Diploid cell. जबरदस्त है ना? So early development अब हम पढ़ रहे हैं बेटा. This is where we grow. So dear students, zygote is the first diploid cell, right? कामिल मुझे बताएंगे अर्ली डेवलपमेंट में क्या होता है. This zygote divides by dash. कामिल भाई. माइटोसिस. देखो दुर्शवार, मियोसिस तब होगा जब हाफ क्रोमोसोम चाहिए. ग्रोथ में तो वी नीड सेम सेल्स अगेन एंड अगेन. सर लेकिन जाइगोट बनाने में तो क्रोमोसोम्स मतलब एग के और स्पर्म के तो हाफ होते हैं, तो वो मियोसिस से नहीं बनता जाइगोट. नहीं, स्पर्म मियोसिस से बनता है, एग मियोसिस से बनता है, बट वंस दे कंबाइन 46 इज रिस्टोर्ड. तो अब वो 46 को अगर आप जाइगोट सेल से और सेल बनेंगे, दे ऑल विल बी हैविंग 46 टू कीप द क्रोमोसोम नंबर सेम.
Meiosis is needed. Yeah, then zygote divide. Yeah. So what happens beta when zygote divides by mitosis? A ball of cells is made. What is that? Embryo. क्या नाम है? मैं क्यों बात नाम भूल जाता हूँ? बासमा. बेटा आप कुछ बता नहीं रही. Ball of cells. Ball of cells called dash and made. Sir, embryo. Embryo. और ये रामीन बताएंगे, हसान बताएंगे. Embryo gets dash. ये पता है जी बहुत मिनिमम है जो आपको लाजमी आना चाहिए. हम कोई फालतू चीज नहीं कर रहे जो बुक वगैरह में लिखी होती है. देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम ये तो वो मिनिमम है ना कि जो लाजमी है. एम्ब्रियो गेट्स किसी बच्चे ने बताया मुझे. खुदा के लिए थोड़ा सोचा भला करें. रमीन मैं आपको सब बताऊं. implanted. Embryo gets implanted. Embryo gets implanted into the dash. Very good. Into the, this is new word, lining of uterus. You know beta what is lining of uterus? Let's label this. By the way, इसको endometrium भी कहते हैं. Endometrium. This is, I repeat, this is ovary. We all know this. And ignore the diagram things. Okay. This one is, what is this? Khadija? Ovary, oviduct, uterus, cervix, vagina. It's not in course. And then this one is, what is it? Uterus lining. It's also called endometrium. So this is, I mean, uterus lining is where embryo gets implanted. ठीक है. अगर यूट्रस इसको ना होल्ड कर सके तो हम कहते हैं मिसकैरेज. शायद आपने सुना हो मिसकैरेज. इट कुड नॉट कैरी. ये ग्रोइंग बेबी है. और बच्चों ये ओविडक्ट है वेयर डैश occurs F से. Very good. And you know the ovary thing is there also. So this is basically the idea of early development that we need to know. There's a bad diagram that you have to bear with me. I should show you by questions, by the way. But you know, in the uterus, please excuse me for this diagram, but anyway, it's not really nice. This is endometrium. आप तक यहाँ कहीं पे भी जो है ना वो हो सकती है इम्प्लांटेशन. टॉप पे भी, इधर भी. जब किसी के 3-4 बच्चे होते हैं ना तो वो एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक ऊपर होगा. हाँ अलबत्ता वो ओविडक्ट में नहीं हो सकता. हमारे कोर्स में तो नहीं है. अगर ओविडक्ट में इम्प्लांटेशन हो जाए तो फिर डेथ हो जाती है बच्चे की. इसको कहते हैं एक्टॉप है क्योंकि जगह इतनी नहीं होती. ओविडक्ट नैरो होती है ना. कैन नॉट मैनेज द होल चाइल्ड. वो इधर ही होते हैं. यहाँ दो इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, दो इधर, दो इधर, दो इधर. उसमें वो फिर यूट्रस बड़ी होती है या बच्चे छोटे होते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ना, अब इसको मैं यूं बनाता हूँ. देखो ये क्या है. व्हाट इज दिस थिंग. अब अगर मैं आपसे इस पूरे को लेबल करो, कैन यू हेल्प मी लेबल दिस ऑल. दिस ब्लैक से मैं करता हूँ ये वाला. अब देखो ये ना बेटा ये यूट्रस भी है और ठहरे इसको मैं यहाँ बनाता हूँ. दिस इज फीटस. बल्कि ये फीटस हो गया. उसके बाहर एक एमनियन. सो दिस वन इज व्हाट? फीटस, द ग्रोइंग फीटस. और बच्चों ये बाहर क्या है? एमनियन या एमनियोटिक सैक. एमनियन. और यहाँ मिडिल में ना I should use, I think this one.
in the middle at this place is what we say amniotic. Very good, amniotic fluid. Well done Basma. Amniotic, sorry, ये अभी देखते हैं, ये मैंने कहा था क्विकली लेबल कर लें, amniotic fluid. And then this one is called, anyone to help me? Wow. This is umbilical cord. And this one is placenta. ये अच्छा नहीं बना. So placenta क्या होता है? Placenta is half maternal, half fetal. You don't need to actually know the definition. I just said this, right? Placenta में आप देखो ना, कुछ मदर का पार्ट और कुछ फीटस का है. Yes or no? तो ये हम लेबलिंग होगी हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा, एमनियोटिक सैक या एमनियन एंड फीटस एमनियोटिक फ्लूइड. इसको एमनियन को एमनियोटिक सैक भी कहते हैं. एमनियोटिक सैक. अब हम इनका फंक्शन देखते हैं. तो इनका जो फंक्शन है ना, दैट इज, आप मुझे हेल्प कराएंगे बेटा? व्हाट इज फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? प्लेसेंटा इज वेयर एक्सचेंज अकर्स बिटवीन मदर एंड फीटस, राइट? प्लेसेंटा से क्या होता है? मदर से अच्छी चीजें बच्चे की तरफ आ जाती हैं, बैड थिंग्स गो टू from the kid to mom. फॉर एग्जाम्पल, 2 मिनट रुक जाओ ना यार, क्लास खत्म हो रही है. अच्छा, हेलो डियर फ्रेंड्स, प्लेसेंटा इज फ्रॉम वेयर, आप मुझे बता सकते हैं व्हाट गोज टू फीटस? ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स. आई मीन एवरी गुड थिंग गोज टू फीटस. बहुत बुरी चीजें नहीं जा सकती, बट देयर आर सम व्हिच कैन गो, सम पैथोजेंस. कैन यू, कुछ आप ऐसे चीज का सोच सकते हैं जो पास कर जाए प्लेसेंटा से? HIV वायरस. दैट्स व्हाई इफ अ मदर इज HIV पॉजिटिव तो वो बेबी को एड्स लगा सकती है. रुबेला वायरस भी, वो भी जा सकता है. आई थिंक ये रेबीज वाला. एंड अगर वो स्मोक करती है तो CO also goes there. So that's why smoking is very, yes, and less oxygen. Underweight babies पैदा होते हैं because of ऑक्सीजन जो कम मिलती है. तो बेटा प्लस, अब आप मुझे बताइए व्हाट डज प्लेसेंटा, या अल्कोहल तो ऑब्वियसली मेंटली रिटार्डेड या जो भी होगा, ऐसे गोरे हमसे तेज हैं. आप मुझे बताएं प्लेसेंटा इज वेयर व्हाट? एक्सचेंज. ये एंटीनेटल केयर है नहीं, वरना हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ते. इट्स कॉल्ड एंटीनेटल केयर, प्रेगनेंसी की जो प्रिकॉशंस होती है. एक्सचेंज अकर्स, डन. एक बहुत इंपॉर्टेंट काम एक और भी है, और वो है बेटा प्रोजेस्टेरॉन. बच्चों, प्लेसेंटा सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम. अगर आपको कोई चीज हॉन्ट करती है, यू हैव ऑल द राइट टू स्टॉप मी, ताकि हम उसको दोबारा पढ़ लें. प्रोजेस्टेरॉन, हाँ, यानी गुड थिंग्स टू फीटस एंड बैड थिंग्स टू मदर. ठीक है बेटा? या एग्जैक्टली, यूरिया, CO2 वेस्ट सारे मदर की तरफ चले जाते हैं. और हाँ, प्रेगनेंसी स्ट्रेसेस में और भी बहुत सारी चीजें हैं. तो बेटा आप देखें कि एक्सचेंज, डन. और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन. व्हाट डज प्रोजेस्टेरॉन डू? इट मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम, मेंटेन्स द. लेकिन जैसे ही बर्थ होने वाली होती है, बाय द एंड ऑफ 9 months, प्लेसेंटा स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरॉन. बिकॉज जब बर्थ होनी है तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, बर्थ के टाइम पे नहीं होना चाहिए. ओनली देन दिस फीटस कैन ब्रेक ऑफ. यस और नो? बेटा समझ आ रही बात? सो बाय द एंड ऑफ 9th month, progesterone, placenta stops secreting progesterone, so endometrium gets weakened. तो एक काम है इसका एक्सचेंज, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स अ बैरियर. सो सम बैड थिंग डजंट गो, बैरियर टू बैड थिंग्स.
So they should not go to fetus. But some things go, except some viruses. And obviously HIV thing. अब मुझे कोई बच्चा बताएगा कि what's the function of umbilical cord, and just one liner, it connects, yeah, good, fetus to mother. और बच्चों amnion क्या करता है? Amnion secretes amniotic fluid. Amnion क्या करता है? Amnion secretes amniotic fluid. इतनी खामोशी आप पता नहीं आप समझ रहे हैं. Amnion और amniotic fluid क्या करता है? That's very important. It provides no friction. It allows free movement. Allows free movement. Fetus की movement है ना? And also it acts as a shock absorber. मैं आपको बताता हूँ. Acts as a shock absorber. इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं जा there's a pregnant lady is walking through और कोई टेबल है जैसे ये बना हुआ है, तो if she gets hit to that, तो यूं हिट होगी ना, तो वो देखें पेट को हिट लगेगी, एमनियन को लगेगी, फीटस बच जाएगा. सो एमनियोटिक फ्लूइड विल प्रोवाइड अ कुशन फॉर मैकेनिकल इंजरीज. आई होप यू अंडरस्टैंड. या किसी ने उसको कोई लड़ाई होगी घर में, खुदा न खासा, इट्स वेरी बैड एग्जांपल, देखिए तो उसको पड़ गया, पंच पड़ गया या लात पड़ गई है, तो शॉक एब्जॉर्बर भी आप सोच सकते हैं. तो अगर वो एथलीट है, कराटे शराटे खेलती है, और वो उसको वो जो है ना, या फिर वैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेस्ट थिंग टू डू इज स्विमिंग. आउट ऑफ कोर्स है लेकिन एरोबिक्स, वो कहते हैं ना झाड़ू लगाना, वो जो गड़े खड़े होकर नहीं लगाते पहुंचा, ये बेस्ट. एक छोटा सा मैं आपको आउट ऑफ कोर्स क्लिप बताऊं. वो ये कि जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है ना ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस, लेबर कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो सर्विक्स वाइडन होता है. तो वो फिर उसमें मस्कुलर जो जिनकी स्टेमिना नहीं होता, इट्स अ वेरी पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन, तो दे स्टॉप कॉन्ट्रैक्टिंग. तो फिर यूं सर्विक्स वाइडन होगा, साथ ही बंद हो जाएगा, तो वो फिर बेबी को मर. तो दिस इज, हम कह सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं ये इसमें कोई इशू हो बेटा? एक सेकंड जी मैं कर, वो शेयर करने काबिल एक भी नहीं, वरना मैं सारी यूट्यूब पे चढ़ा दूं. तो वो अभी उसके सारे नोट्स भी बहुत 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 दिन है यार. बस ये मुझे सैटरडे नाइट आप दे, मैंने इंशाल्लाह दिस सैटरडे नाइट विल बी गेटिंग एवरीथिंग. तो ये हमारे पास एक टॉपिक है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन. कैन यू हेल्प मी इट्स फंक्शन? Testosterone, beta. Testosterone, this is very important that we are doing now, and time is less, but testosterone is the male sex hormone, right? So testosterone does two things. Number one, it develops secondary sexual features. Secondary sexual features are other than producing sperms, like beard, deep voice, more muscles. I hope you understand it. Hairs and body parts. So, and secondly, production of sperms. So testosterone is produced by testes, and its job is to give secondary sexual features to human males and production of sperm. मेरा ख्याल है ये टॉपिक तो अभी होगा नहीं, तो better we see some questions and this 4 minutes and we'll be back. इसे रिज्यूम करेंगे कल. अच्छा ओके, तो बच्चों ये अब आप मुझे हेल्प कराएं. लेट्स सी few questions here together. Okay, quick please. Hello online, Fahd, Durishabad, Heather. Quick please, quick. Who says? It is good. No one from online? ये भी नहीं पढ़ा.
Yes. You know what is this, by the way? Which What else is human reproduction? okay. Fahd, Rahim, Durishawar, Amir Haider, nothing from your side. Beta. Charlie. Because that is acrosome, the head that has enzymes to cut the egg layer, right? Egg means ovum. It is involved in that. Oh, Digestion of ovum. Ovum is the egg. तो ओवम की जो कवर है ना उसको तोड़ता है, सही है? नहीं समझ आई? एक्रोसोम, ये भी नहीं पढ़ा अभी, ये फ्यूजन स्पर्म. Okay, what description of cell X is right? beta. Nice, good. Next बच्चों जल्दी से. Allah, what is X? तो ये ovary है? Yeah, so what's the function of ovum? See? Sir, beta. Thank you, Fahd. A, I think A, Durishawar, A. Good going, Durishawar. देखो ओवरी में, ओवरी क्या करती है? हार्मोन भी बनाती है और गैमेट भी बनाती है. कामिल भाई, which gamete does the ovary make? जल्दी से बताओ. ये खत्म हो रही है मीटिंग. Which gamete does the ovary make? Egg. And which hormone? Estrogen and progesterone. ये अगली क्लास के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Ovary makes estrogen and, are you listening? Ovary makes estrogen and, Khadija, ovary makes estrogen and Progesterone. प्रोजेस्ट्रॉन. ऑस्ट्रोजन बेटा याद रखो ओवरी बनाता है, प्रोजेस्ट्रॉन भी ओवरी बनाता है. बट इफ अ लेडी गॉट प्रेग्नेंट, देन द होल 9 months प्रोजेस्ट्रॉन इज मेड बाय प्लेसेंटा. ये सारा कुछ मैं आपको रिटन फॉर्म में भी दूंगा, हम इसके रिवीजन भी करेंगे, लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है. ओवरी मेक्स ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन बोथ. इफ अ लेडी गॉट प्रेग्नेंट, देन प्लेसेंटा विल मेक प्रोजेस्ट्रॉन. यस और नो? और ऑस्ट्रोजन 9 महीने नहीं बनेगा. एक सेकेंड, अब आप मुझे बताइए कि इसका आंसर 7 का क्या हो सकता है. वी हैव लास्ट मिनट इन आवर हैंड. मेंस्ट्रुएशन हमने नहीं पढ़ा, तो छोड़ देते हैं. क्वेश्चन 8. बाय द टाइम मीटिंग एंड्स, ओहो चलो ये भी हमने नहीं पढ़ा, ये रिमूव हो गया कोर्स से. ये हम पढ़ लिए, ये हमने पढ़ लिया, और ये कोर्स निकल गया. लेकिन चलें, सी यू ऑल, बाय बाय. अल्लाह हाफ़िज़ सर. स्पर्म डक्ट.